Uh, I have sent you an assignment also. Are you working on that? Okay, I want to know. I want to. I want to see anyone's screen. Can anyone show me the screen, please? I want to see the Google Classroom of neural networks in your screen. Yes, Rakesh, please open the classroom. Okay, yes, go in the classwork. Click on the top menu. Uh, the left top corner menu where it is written MTech third. Click on that. Calendar. Calendar. Yes, click on the calendar. Uh, can you show me the whole August month? Yes, click on Monday 24th. Click on the neural network class. Click on the neural network class. Yes, now you all can see the Google Meet link. Uh, Close from the top left and now go to Tuesday 25 August. Click on the neural network class. Yes, in every your I have uploaded the Google Meet link in your every schedule of your class. Now you can directly go to your Google Calendar, every student, and click directly on the Google Meet link. Okay, you all have to go like this, Rakesh is going. You have to go to your respective calendars, and then when you click on your class timetable, you can find the Google Meet link. I have emailed the details to every student in the class. You can find out all the students are there. I have given all access to all the students now, and now you can go directly meet. You can join the meet from this link. No, I will not update daily in the classwork also. Now you can directly go into your calendars. Okay, is it fine now? सभी को समझ में आ गया? राकेश, you can close your screen now.
So is it clear to all of the students that you how you have to join the class? Where are others? Ashish, Isha, Jitender, Preeti. You all are listening to me or not? Now you can go to your calendars and you can check these things. Okay. In your calendar you will find directly the link. I will send more details to you in that calendar. Okay. So now I will switch to quickly to the next topic. So to start, I have told you yesterday. I have shown you a video also yesterday, and today also I will show you another video about the artificial neural networks, so that it will be clear to you about the operations in a artificial neural network and the updation system of a artificial neural network. How the system is updated in a artificial neural network. Because I have to move towards the last slide in which I have shown you about the update and the operations of a artificial neural network. Because these 2 points are very important. If I try to read this from the book, it will be very difficult for you to understand the things. That is why I will show you a video which is related to this figure. This figure is very important for us. मैं जब भी घुमा फिरा के हमेशा इसी फिगर के ऊपर लेके आता हूँ, बिकॉज जब तक हमें ये वाली फिगर क्लियर नहीं होगी, हमारी नेक्स्ट आगे के जो मॉडल्स हैं और आगे के जो आर्किटेक्चर्स हैं और आगे के हमारे जो लर्निंग टेक्निक्स हैं वो क्लियर नहीं हो पाएंगी जब तक हमारे को ये वाला मॉडल जो है हमारा आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क का ये क्लियर नहीं होगा. सो यहाँ जब भी हम कंपेयर कर रहे हैं हमारी आउटपुट को डिज़ायर्ड आउटपुट से, तो हमको अपना सिस्टम अपडेट करना पड़ेगा. तो वो अपडेशन कैसे होगी उसी के ऊपर मैंने कल आपको एक वीडियो दिखाई थी जिसके अंदर हम कोआला को आइडेंटिफाई कर रहे थे. उसकी आइज़, उसके नोज़, उसके ईयर्स, उसकी लेग्स, उन सब से हम कंपेयर कर रहे थे. सर जी था, आपने याद हो तो आपको कल वाला लेक्चर. तो उसके बाद अगर उसके अंदर कोई एरर था वो उसको अपडेट भी कर रहे थे. तो उसी के आगे एक और मैं आपको वीडियो दिखाऊंगा. ये मैं वीडियोस दोनों के दोनों वीडियोस मैं आपकी क्लासरूम में भी अपलोड करूंगा और यू कैन ईजिली फाइंड आउट दीज वीडियोस इन द यूट्यूब पे भी मैं आपको एक लिंक भेजूँगा इनकी. व्हाट इज़ ए न्यूरल नेटवर्क. आई होप कि जब ये वीडियो ख़त्म होगी तो आपको न्यूरल नेटवर्क के जो बेसिक्स हैं वो आज आपके क्लियर हो जानी चाहिए जब आप ये वीडियो देख लेंगे. तो उसके बाद में आगे जो हम मॉडल्स पढ़ेंगे और लर्निंग की टेक्निक्स पढ़ेंगे तो वो आपके लिए शायद काफ़ी इजी हो जाएगा समझना. तो आई होप आप सभी को ये वीडियो पसंद आए और समझ में आए.
Sound is audible to This you? is a 3. Is it clear? It's sloppily written and rendered at an extremely low resolution of 20. Is it clear or I have to make some changes? The sound is audible? Okay. This is a 3. It's sloppily written and rendered at an extremely low resolution of 28 by 28 pixels, but your brain has no trouble recognizing it as a 3. And I want you to take a moment to appreciate how crazy it is that brains can do this so effortlessly. I mean, this, and this are also recognizable as 3s, even though the specific values of each pixel is very different from one image to the next. The particular light-sensitive cells in your eye that are firing when you see this 3 are very different from the ones firing when you see this 3. But something in that crazy smart visual cortex of yours resolves these as representing the same idea, while at the same time recognizing other images as their own distinct ideas. But if I told you, hey, sit down and write for me a program that takes in a grid of 28 by 28 pixels like this, and outputs a single number between 0 and 10, telling you what it thinks the digit is, well, the task goes from comically trivial to dauntingly difficult. Unless you've been living under a rock, I think I hardly need to motivate the relevance and importance of machine learning and neural networks to the present and to the future. But what I want to do here is show you what a neural network actually is, assuming no background, and to help visualize what it's doing, not as a buzzword, but as a piece of math. My hope is just that you come away feeling like the structure itself is motivated, and to feel like you know what it means when you read or you hear about a neural network, quote-unquote, learning. This video is just going to be devoted to the structure component of that, and the following one is going to tackle learning. What we're going to do is put together a neural network that can learn to recognize handwritten digits. This is a somewhat classic example for introducing the topic. And I'm happy to stick with the status quo here, because at the end of the 2 videos, I want to point you to a couple good resources where you can learn more, and where you can download the code that does this and play with it on your own computer. There are many variants of neural networks, and in recent years there's been sort of a boom in research towards these variants. But in these 2 introductory videos, you and I are just going to look at the simplest, plain vanilla form with no added frills. This is kind of a necessary... Just a minute. Uh, should I explain or are you getting the video? prerequisite for understanding any of the more powerful modern variants, and trust me, it still has plenty of complexity for us to wrap our minds around. But even in this simplest form, it can learn to recognize handwritten digits, which is a pretty cool thing for a computer to be able to do. And at the same time, you'll see how it does fall short of a couple hopes that we might have for it. As the name suggests, neural networks are inspired by the brain. But let's break that down. What are the neurons, and in what sense are they linked together? Right now, when I say neuron, all I want you to think about is a thing that holds a number, specifically a number between 0 and 1. It's really not more than that. For example, the network starts with a bunch of neurons corresponding to each of the 28 times 28 pixels of the input image, which is 784 neurons in total. Each one of these holds a number that represents the grayscale value of the corresponding pixel, ranging from 0 for black pixels up to 1 for white pixels. This number inside the neuron is called its activation. And the image you might have in mind here is that each neuron is lit up when its activation is a high number. So all of these 784 neurons make up the first layer of our network. Now jumping over to the last layer, this has 10 neurons, each representing one of the digits. The activation in these neurons, again, some number that's between 0 and 1, represents how much the system thinks that a given image corresponds with a given digit.
There's also a couple layers in between called the hidden layers, which for the time being should just be a giant question mark for how on earth this process of recognizing digits is going to be handled. In this network, I chose two hidden layers, each one with 16 neurons, and admittedly, that's kind of an arbitrary choice. To be honest, I chose two layers based on how I want to motivate the structure in just a moment, and 16, well, that was just a nice number to fit on the screen. In practice, there is a lot of room for experiment with a specific structure here. The way the network operates, activations in one layer determine the activations of the next layer. And of course, the heart of the network, as an information processing mechanism, comes down to exactly how those activations from one layer bring about activations in the next layer. It's meant to be loosely analogous to how in biological networks of neurons, some groups of neurons firing cause certain others to fire. Now, the network I'm showing here has already been trained to recognize digits, and let me show you what I mean by that. It means if you feed in an image, lighting up all 784 neurons of the input layer according to the brightness of each pixel in the image, that pattern of activations causes some very specific pattern in the next layer, which causes some pattern in the one after it, which finally gives some pattern in the output layer. And the brightest neuron of that output layer is the network's choice, so to speak, for what digit this image represents. And before jumping into the math for how one layer influences the next, or how training works, let's just talk about why it's even reasonable to expect a layered structure like this to behave intelligently. What are we expecting here? What is the best hope for what those middle layers might be doing? Well, when you or I recognize digits, we piece together various components. A 9 has a loop up top and a line on the right. An 8 also has a loop up top, but it's paired with another loop down low. A 4 basically breaks down into 3 specific lines and things like that. Now, in a perfect world, we might hope that each neuron in the second to last layer corresponds with one of these subcomponents. That anytime you feed in an image with, say, a loop up top, like a 9 or an 8, there's some specific neuron whose activation is going to be close to 1. And I don't mean this specific loop of pixels. The hope would be that any generally loopy pattern towards the top sets off this neuron. That way, going from the third layer to the last one just requires learning which combination of subcomponents corresponds to which digits. Of course, that just kicks the problem down the road, because how would you recognize these subcomponents or even learn what the right subcomponents should be? And I still haven't even talked about how one layer influences the next, but run with me on this one for a moment. Recognizing a loop can also break down into subproblems. One reasonable way to do this would be to first recognize the various little edges that make it up. Similarly, a long line, like the kind you might see in the digits 1 or 4 or 7, well, that's really just a long edge, or maybe you think of it as a certain pattern of several smaller edges. So maybe our hope is that each neuron in the second layer of the network corresponds with the various relevant little edges. Maybe when an image like this one comes in, it lights up all of the neurons associated with around 8 to 10 specific little edges, which in turn lights up the neurons associated with the upper loop and a long vertical line, and those light up the neuron associated with a 9. Whether or not this is what our final network actually does is another question, one that I'll come back to once we see how to train the network. But this is a hope that we might have, a sort of goal with the layered structure like this. Moreover, you can imagine how being able to detect edges and patterns like this would be really useful for other image recognition tasks. And even beyond image recognition, there are all sorts of intelligent things you might want to do that break down into layers of abstraction. Parsing speech, for example, involves taking raw audio and picking out distinct sounds, which combine to make certain syllables, which combine to form words, which combine to make up phrases and more abstract thoughts, etc. But getting back to how any of this actually works, picture yourself right now designing how exactly the activations in one layer might determine the activations in the next. The goal is to have some mechanism that could conceivably combine pixels into edges, or edges into patterns, or patterns into digits. And to zoom in on one very specific example, let's say the hope is for one particular neuron in the second layer to pick up on whether or not the image has an edge in this region here. The question at hand is, what parameters should the network have? What dials and knobs should you be able to tweak so that it's expressive enough to potentially capture this pattern?
or any other pixel pattern, or the pattern that several edges can make a loop, and other such things. Well, what we'll do is assign a weight to each one of the connections between our neuron and the neurons from the first layer. These weights are just numbers. Then, take all of those activations from the first layer and compute their weighted sum according to these weights. I find it helpful to think of these weights as being organized into a little grid of their own, and I'm going to use green pixels to indicate positive weights and red pixels to indicate negative weights, where the brightness of that pixel is some loose depiction of the weight's value. Now, if we made the weights associated with almost all of the pixels 0, except for some positive weights in this region that we care about, then taking the weighted sum of all the pixel values really just amounts to adding up the values of the pixel just in the region that we care about. And if you really wanted to pick up on whether there's an edge here, what you might do is have some negative weights associated with the surrounding pixels. Then the sum is largest when those middle pixels are bright, but the surrounding pixels are darker. When you compute a weighted sum like this, you might come out with any number. But for this network, what we want is for activations to be some value between 0 and 1. So a common thing to do is to pump this weighted sum into some function that squishes the real number line into the range between 0 and 1. And a common function that does this is called the sigmoid function, also known as a logistic curve. Basically, very negative inputs end up close to 0, very positive inputs end up close to 1, and it just steadily increases around the input 0. So the activation of the neuron here is basically a measure of how positive the relevant weighted sum is. But maybe it's not that you want the neuron to light up when the weighted sum is bigger than 0. Maybe you only want it to be active when the sum is bigger than, say, 10. That is, you want some bias for it to be inactive. What we'll do then is just add in some other number, like negative 10, to this weighted sum before plugging it through the sigmoid squishification function. That additional number is called the bias. So the weights tell you what pixel pattern this neuron in the second layer is picking up on, and the bias tells you how high the weighted sum needs to be before the neuron starts getting meaningfully active. And that is just one neuron. Every other neuron in this layer is going to be connected to all 784 pixel neurons from the first layer. And each one of those 784 connections has its own weight associated with it. Also, each one has some bias, some other number that you add on to the weighted sum before squishing it with the sigmoid. And that's a lot to think about. With this hidden layer of 16 neurons, that's a total of 784 times 16 weights, along with 16 biases. And all of that is just the connections from the first layer to the second. The connections between the other layers also have a bunch of weights and biases associated with them. All said and done, this network has almost exactly 13,000 total weights and biases. 13,000 knobs and dials that can be tweaked and turned to make this network behave in different ways. So when we talk about learning, what that's referring to is getting the computer to find a valid setting for all of these many, many numbers so that it'll actually solve the problem at hand. One thought experiment that is at once fun and kind of horrifying is to imagine sitting down and setting all of these weights and biases by hand, purposefully tweaking the numbers so that the second layer picks up on edges, the third layer picks up on patterns, etc. I personally find this satisfying rather than just treating the network as a total black box, because when the network doesn't perform the way you anticipate, if you've built up a little bit of a relationship with what those weights and biases actually mean, you have a starting place for experimenting with how to change the structure to improve. Or when the network does work, but not for the reasons you might expect, digging into what the weights and biases are doing is a good way to challenge your assumptions and really expose the full space of possible solutions. By the way, the actual function here is a little cumbersome to write down, don't you think? So let me show you a more notationally compact way that these connections are represented. This is how you'd see it if you choose to read up more about neural networks. Organize all of the activations from one layer into a column as a vector. Then organize all of the weights as a matrix, where each row of that matrix corresponds to the connections between one layer and a particular neuron in the next layer.
What that means is that taking the weighted sum of the activations in the first layer, according to these weights, corresponds to one of the terms in the matrix vector product of everything we have on the left here. By the way, so much of machine learning just comes down to having a good grasp of linear algebra, so for any of you who want a nice visual understanding for matrices and what matrix vector multiplication means, take a look at the series I did on linear algebra, especially chapter 3. Back to our expression, instead of talking about adding the bias to each one of these values independently, we represent it by organizing all those biases into a vector and adding the entire vector to the previous matrix vector product. Then, as a final step, I'll wrap a sigmoid around the outside here. And what that's supposed to represent is that you're going to apply the sigmoid function to each specific component of the resulting vector inside. So, once you write down this weight matrix and these vectors as their own symbols, you can communicate the full transition of activations from one layer to the next in an extremely tight and neat little expression. And this makes the relevant code both a lot simpler and a lot faster, since many libraries optimize the heck out of matrix multiplication. Remember how earlier I said these neurons are simply things that hold numbers? Well, of course, the specific numbers that they hold depends on the image you feed in. So it's actually more accurate to think of each neuron as a function, one that takes in the outputs of all the neurons in the previous layer and spits out a number between 0 and 1. Really, the entire network is just a function, one that takes in 784 numbers as an input and spits out 10 numbers as an output. It's an absurdly complicated function, one that involves 13,000 parameters in the forms of these weights and biases that pick up on certain patterns, and which involves iterating many matrix vector products and the sigmoid squishification function. But it's just a function nonetheless. And in a way, it's kind of reassuring that it looks complicated. I mean, if it were any simpler, what hope would we have that it could take on the challenge of recognizing digits? And how does it take on that challenge? How does this network learn the appropriate weights and biases just by looking at data? Well, that's what I'll show in the next video. And I'll also dig a little more. Students, this video which I have shown to you is the moral of all the theory present in the artificial neural network book. आपकी जो टेक्स्ट बुक है यगना नारायण की, उसकी जो पूरी जो थ्योरी है उसके अंदर जौन जौन से टर्म्स हमारी यूज़ होंगी उन सब को समझाने की जो कोशिश है वो इस वीडियो के अंदर की गई है. मेरे को अब तक न्यूरल नेटवर्क्स पे सबसे अच्छा जो इजी टू अंडरस्टैंड जो वीडियो है उसके अंदर जो टर्म्स यूज़ हो रही हैं, उसके अंदर जो इक्वेशंस जो फंक्शंस यूज़ हो रही हैं, उनको शो करने के लिए जो एक वीडियो था वो मैंने आपको दिखाया. आई विल अपलोड दिस वीडियो इन द क्लासरूम आल्सो so that you can again watch this and it will be easy for you when we switch to the next important parts of our syllabus. हमारे जो सिलेबस के जो इम्पोर्टेंट पार्ट्स अब तक हमने सिर्फ लगभग थ्योरी के टाइप्स ही पढ़ी हैं. अब हम जो इक्वेशंस पढ़ेंगे हमारे न्यूरल नेटवर्क्स की, उनको समझने के लिए हमारी जो इक्वेशंस हैं, हमारी जो टाइप्स हैं लर्निंग की, मेथड्स हैं, टोपोलॉजीज़ हैं, मॉडल्स हैं, टर्म्स हैं जो यूज़ होंगी, तो उन सब को समझने के लिए उनके अंदर जो इक्वेशंस हैं उनको समझने के लिए एक वीडियो मैंने आपको दिखाया है ये आज. तो बेसिकली ये जो वीडियो मैंने आपको दिखाया है ये वीडियो आपको शो कर रहा है अबाउट दी बेसिक्स ऑफ न्यूरल नेटवर्क, कैसे एक न्यूरल नेटवर्क काम कर रहा है. तो इसके अंदर क्या मैं आपको फटाफट बता देता हूँ जल्दी से, कि बाकी आप वीडियो को दोबारा चाहूँगा कि आप अपने मोबाइल्स या लैपटॉप्स के अंदर दोबारा से मंडे तक इस वीडियो को दोबारा एक बार देखें, सो दैट आपको आगे की जो फंक्शंस है और इक्वेशंस है समझ में आ जाए. तो इसके अंदर बेसिकली क्या किया गया है, हमारे पास मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ. आपके मोबाइल के ऊपर अगर आप अपने हाथ से कुछ डिजिट लिखते हैं तो आपका मोबाइल का जो आप अपने स्क्रीन पे कुछ भी डिजिट लिखी उसको ऑटोमेटिकली वो रिकॉग्नाइज़ करके, फॉर एग्जांपल आपने ए लिखा या बी लिखा,
तो आप हर एक की लैंग्वेज, राइटिंग लैंग्वेज डिफरेंट होती है एक दूसरे से। तो जब भी हम कोई ऐसा पैटर्न लिख रहे हैं अपने स्क्रीन के ऊपर, तो वो सिस्टम उसको रिकॉग्नाइज करके और उसको एज ए ही कंसिडर करता है। या फिर मैं बताऊँ, अगर आप आपके फ़ोन के ऊपर अगर आप गूगल टॉक करते हैं, आप गूगल से कुछ आस्क करते हैं कि आप पूछते हैं कि आज हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो हर एक का जो इंग्लिश बोलने का जो एक्सेंट है वो हर एक का डिफरेंट है। तो अगर किसी ने कहा हाउ इज़ द वेदर टुडे, तो मैंने किसी और तरीके से कहूँगा, आप किसी और तरीके से कहोगे, और सभी की वॉइस की जो पिच लेवल है यानी कि जो बायस है वो भी हर एक की डिफरेंट है। तो हर कोई डिफरेंट एक्सेंट में बात कर रहा है, उसकी ट्यून अलग है, उसकी फ्रीक्वेंसी अलग है। स्टिल गूगल क्या कर रहा है, उसको रिकग्नाइज कर रहा है आपकी वॉइस को और बता पा रहा है कि आज का वेदर कंडीशंस क्या है। या फिर आप अपने स्क्रीन के ऊपर अगर आपने हाथ से 7 लिख रहे हैं या 8 लिख रहे हैं, तो हमारा स्क्रीन के अगर हमने 7 लिखा तो वो उसको रिकग्नाइज करने की कोशिश कर रहा है कि आपने 7 लिखा है। हर एक का 7 लिखने का तरीका अलग है। तो यही इस एग्जाम्पल के अंदर बताया गया है कि जब आप अपने स्क्रीन पे 7, 8, 9, 1, 2 ABCD कुछ भी लिख रहे हैं, तो हमारा जो सिस्टम है उसको प्रोसेस करके उसको रिकॉग्नाइज करने की कोशिश करता है। हालांकि हर बारी वो ढंग से रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, कई बार दिक्कत हो जाती है कि उसको एक्सेंट हमारा समझ में नहीं आता, हमारी राइटिंग समझ में नहीं आती है, फिर भी वो उसको लिखने की और उसको टाइप करने की कोशिश करता है जो आप टाइप कर रहे हैं। सो दैट इज़ डन विद द हेल्प ऑफ न्यूरल नेटवर्क्स, दैट इज़ आल्सो नोन एज डीप लर्निंग। तो इसके अंदर यही दिखाया गया है, एक 28x28 का हमने एक पिक्सल का एक हमने स्क्रीन लिया है जिसके ऊपर काफ़ी सारे पिक्सल्स हैं। दीज आर द पिक्सल्स 28x28। सो 28 रोज एंड 28 कॉलम्स है इसके अंदर। टोटल 784 पिक्सल्स लिए गए हैं। तो उसकी जो वैल्यूज़ हैं, इनके अंदर वैल्यूज़ 0 से 1 के बीच में जो भी वैल्यू होगी वो हमारी इनपुट मानी जाएगी। तो वैल्यू जैसे हमने 9 लिखा, तो जहाँ जहाँ पे 9 हमने स्ट्रॉन्ग लिखा तो वैल्यू 1 होती जाएगी, कम लिखते गए तो वैल्यू हमारी 1 से 0 पे जाती चली जाएगी। तो यहाँ आप स्क्रीन में चेक करेंगे अपने में, तो यहाँ आपको वैल्यूज़ मिलेंगी काफ़ी सारी। अगर आपकी स्क्रीन पे विजिबल नहीं है तो आप अपने मोबाइल पे चलाएंगे इस वीडियो को, मैं आपको अपलोड करके दूंगा इस वीडियो को, तो आपको पता चल जाएगा कि क्या वैल्यूज़ हैं उसके अंदर। तो आप चेक करेंगे तो वीडियोस के अंदर आप 0.8, 10, 1.3 ये काफ़ी सारी वैल्यूज़ आ रही हैं इसके अंदर। तो ये वैल्यूज़ हमने एज ए इनपुट डाली हैं हमारे न्यूरल नेटवर्क के अंदर। सो दीज आर दी वैल्यूज़ दैट आर आल्सो नोन एज, हमारी जो न्यूरल नेटवर्क की जो टर्म है मैं बार बार यूज़ कर रहा हूँ, एक्टिवेशन। सो ये एक्टिवेशन इनपुट्स हैं हमारी, ये सारी हमने फेड कर दी हैं एज ए इनपुट टू 784। हमारे जो इनपुट्स हैं, हमारे पिक्सल्स जो हैं 784, उनको हमने एज ए इनपुट माना। ये इनपुट सारे हमारी हिडन लेयर्स के अंदर, हमारी 16 हिडन लेयर ए है और 16 इनपुट हमारी हिडन लेयर बी के अंदर हैं। और हमारी 0 से लेके 9 तक हमारी जो 10 आउटपुट आ रही हैं, तो या तो 0 आएगा, 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4, 5, 6, 7, 8, 9 कुछ भी हमारा आ सकता है जो भी हमने लिखा हमारे स्क्रीन के ऊपर। ओके, सो दीज आर दी हिडन लेयर्स। तो इसके अंदर 2 हिडन लेयर्स ली थी, 16 न्यूरॉन्स थे हर लेयर के अंदर। तो ये हिडन लेयर्स पैटर्न्स को रिकॉग्नाइज कर रही हैं। हमने हिडन लेयर फर्स्ट के अंदर कुछ पैटर्न्स डाल दिए हैं और सेकंड के अंदर भी पैटर्न, दोनों का अगर मैच हो जाएगा तो हमारी आउटपुट आएगी। तो वो पैटर्न आपने वीडियो चेक किया हो तो पैटर्न देखो, इस तरह के हमने पैटर्न डाल रखे हैं हिडन लेयर बी के अंदर। इस तरह के हमारे पैटर्न हैं, आपके स्क्रीन पे दिख रहे हैं। ये सारे पैटर्न्स हमने डाल दिए हैं। तो हम जब भी 7, 8, 9, 0, 1, 2, 3 कुछ भी लिखेंगे तो सबसे पहले हिडन लेयर ए और बी के अंदर ये पैटर्न मैच होंगे। बी के अंदर स्पेसिफिक पैटर्न्स हैं
और ए के अंदर जो है हमारे जो पैटर्न्स हैं, ज़ीरो को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया अलग अलग पार्ट्स में। सो ये सारे पैटर्न हमने ए के अंदर डाल दिए हैं। तो ए से हिडन लेयर, ए से हमारी हिडन लेयर बी के अंदर हमारे स्पेसिफिक पैटर्न है, उन सब से हम ये मैच करेंगे और मैच करके हम फाइनली हमारे जो हिडन लेयर्स हैं वो वैल्यूज़ फाइंड आउट करेंगे। Okay, so this is the basic working of our neural network. With the help of these patterns, हमने ये patterns fix कर दिए हैं। मैंने आपको अपनी जो पावर पॉइंट की स्लाइड थी इसके अंदर भी शो किया था हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट। सो दीज आर द डिज़ायर्ड आउटपुट्स, जो हमारी हिडन नेटवर्क के अंदर जो आउटपुट्स हैं ये हमारी डिज़ायर्ड आउटपुट्स हैं। डिज़ायर्ड आउटपुट्स को हमसे हम इसको मैच करेंगे हमारी एक्चुअल आउटपुट को। तो अगर वो उससे मैच हो रही है सो दैट विल बी आवर फाइनल आउटपुट। ये वो 9 है, 7 है, 6 है, वो कुछ भी हो सकता है। सो तो ये पैरामीटर्स हैं, पैरामीटर्स को और वेट्स हैं। वेट्स हमने लगा रखे हैं, वेटेज दे रखी है हर इनपुट को। क्यों दे रखी है, एक बार दोबारा से वीडियो को आप दोबारा से समझना कि वेटेज हमने किस तरह से दे रखी है। कुछ वेट्स पॉजिटिव हैं, कुछ नेगेटिव हैं अकॉर्डिंग टू द एरिया। किसी स्पेसिफिक एरिया के अंदर हमारा वेट है तो वो नेगेटिव आएगा, किसी स्पेसिफिक में हमारा वेट है तो वो पॉजिटिव आएगा। तो ब्लैक, ब्लैक, ग्रीन और रेड, 3 तरह की हमने वेटेज दे रखी है हमारे पूरे पैटर्न जो 784 पिक्सल्स हैं उसके अंदर हमने एक वेटेज दे रखी है हर पिक्सल को, कि यहाँ हम कुछ लिखेंगे तो उसको क्या वेटेज होगी और यहाँ हम लिखेंगे तो उसको वेटेज प्लस होगी, माइनस होगी या न्यूट्रल होगी। तो वो इसके अंदर हमने शो रखा है जिस तरह से ये स्क्रीन पे आपको दिख रहा है। तो इसके अकॉर्डिंग हमने अगर यहाँ पे 7 लिखा तो यहाँ की 7 के आसपास जो भी हमारी वेटेज है आइदर ग्रीन और रेड, तो वो एज दैट वो मार्क हो जाएगी आइदर प्लस या माइनस। सो उसके बाद हमारी जो फाइनल आउटपुट आएगी व्हेन वी मल्टीप्लाई द इनपुट्स विद द वेट्स। इनपुट्स को वेट्स के साथ मल्टीप्लाई करने के बाद हमारी जो भी आउटपुट आएगी वो आउटपुट लगभग आएगी -4 to 4। ये हमने वेटेज दे रखी है इतने इस एग्जाम्पल के अंदर। तो किसी और एग्जाम्पल के अंदर -16 to 16, किसी और एग्जाम्पल के अंदर -10 to 10 या -5 to 5। तो हमारी वेटेज के अकॉर्डिंग हमारी जो आउटपुट आएगी वो कुछ भी वेरी कर सकती है जितनी हमारी वेटेज होगी। मगर एक्चुअली हमने क्या करना है, हमारे जो हिडन लेयर्स हैं उनके अंदर हमने एक स्पेसिफिक इंफॉर्मेशन डालनी है बिटवीन 0 to 1। तो हमारी जो रेंज है, जो ये हमारी रेंज है -4 to 4, इसको हमें लिमिटेड करना है फ्रॉम 0 to 1 ओनली। हमको 0 से 1 के बीच में ही हमारी जो वैल्यू है, एक्टिवेशन वैल्यू, वो हमारी 0 to 1 के बीच में आनी चाहिए। इसके लिए हम फंक्शन यूज़ कर रहे हैं सिग्मॉइड फंक्शन, जो हमारी वैल्यू को 0 to 1 के बीच में रैप कर देता है, उसके अंदर उसको जोड़ देता है। हमारी वैल्यू जो भी आ रही है उसको फाइनली 0 to 1 के बीच में उसको निकालता है। सो ऑलवेज व्हेन वी फाइंड आउट द एक्टिवेशन वैल्यू एट एनी पॉइंट इट विल बी विद द हेल्प ऑफ ए सिग्मॉइड फंक्शन। सो उसके बाद हमने एक बायसिंग टर्म और लगाई है इसके अंदर। बायसिंग टर्म हमारी क्या कर रही है, हमारा जो वेटेड सम है वो हमारा 10 से बड़ा होगा तभी हमारी वैल्यू मीनिंगफुल होगी। तो यहाँ पे मैंने बायसिंग -10 रखी है। इस वीडियो के अंदर से दोबारा अगर आप पढ़ना एक बार इसको कि बायसिंग क्या कर रही है तो आपको और ज़्यादा क्लियर होगा बायसिंग के बारे में। तो ये यहाँ पे 10 लिख रखी है, 20, 5, 4 कोई भी हमारी बायसिंग वैल्यू हो सकती है, जिससे हम अपनी वैल्यू को 0 to 1 के बीच में स्पेसिफाइड करते हैं कि हमारी वैल्यू 0 to 1 के बीच में क्या है। सो विद द हेल्प ऑफ सिग्मॉइड एंड बायसिंग वी डन दिस। सो जितने भी हमारी इनपुट्स हैं वो एवरी जो हमारी 16 लेयर्स हैं, हिडन लेयर जो एक ही हैं, उनको हमारी इंफॉर्मेशन एक्टिवेशन फंक्शन के थ्रू वैल्यू दे रहे हैं। तो हर एक के ऊपर हमारे 784 × 16 वेट्स और 1 बाइस हमने हर एक को दिया।
So overall structure consists of 13002 activated functions, अभी इसके अंदर दिखा रखा है. So this is the final formula for that कि sigmoid function weights multiplied by the inputs उन सब का sum plus the bias और उसका sigmoid. So this is the final value for a particular hidden layer in activation function. जो हमारा activation function है यहाँ मैं आपको शो कर रहा हूँ. ये एक्टिवेशन फंक्शन इन वेट्स की मदद से जो हमारा एक्टिवेशन फंक्शन आ रहा है दिस वन. सो ये जो वैल्यू है, सो दिस इज़ विद द हेल्प ऑफ दिस फार्मूला. ये हमारा फार्मूला है. मैं चाहूँगा इस वीडियो को एक बार प्लीज़ सारे दोबारा से देखें जिसके कारण आपको ये फार्मूला समझ में आ जाए. सो व्हाट वी डन हेयर इज़ ए मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन. हमने क्या किया, सारी फॉर एग्जांपल फॉर द फर्स्ट हिडन नोड, हमारी जो पहली हिडन नोड है उसके ऊपर हमें एक्टिवेटेड आउटपुट निकालनी है. तो हमने क्या किया, सारी इनपुट्स को ले लिया, दीज आर दी ऑल द इनपुट्स, और उनसे कनेक्टेड जितने वेट्स थे सभी को 0 W002 W0N टू WK02 WKN इन सब की मैट्रिक्स मल्टीप्लिकेशन होगी और हमारी कुछ वैल्यू आएगी. तो जो वैल्यू आएगी उसके अंदर हम क्या करेंगे, बायस को भी ऐड कर देंगे एंड ओवरऑल वी अप्लाई ए सिग्मॉइड फंक्शन. सो दिस इज़ द फार्मूला ऑफ आर्टिफिशियल न्यूरल नेटवर्क कैलकुलेशन. ये हमारा एक्टिवेशन फंक्शन का जो फार्मूला है वो ये फार्मूला है. आप आगे पढ़ेंगे, मैं आपको दिखाऊंगा, आपको पढ़ाऊंगा आपके बुक के अंदर कि सारे के सारे जितने भी फार्मूले आगे आएंगे, आपके आगे आने हैं कम से कम भी 100-200 फार्मूले जो आपको याद करने हैं. उन सब का जो बेस है वो ये फार्मूला है. ये आपको सभी को याद रखना है. तो इसलिए प्लीज़ आप इस वीडियो को दोबारा से देखिए. मैं आज का लेक्चर यहीं पे कंप्लीट कर रहा हूँ. I hope that everyone have understood this video. And everything is now clear to you.